Assalamu alaikum, Dr. Afreenish. Are you here with us? All right. All right. So I would like to introduce our second speaker to all of the participants today. Dr. Afreenish is an experienced microbiologist. She is the project director for antimicrobial resistance and national fungal disease surveillance systems at the National Institute of Health. She is an MBBS doctor from RMC, and she has done her PhD in microbiology and pathology from NUMS. She has a lot of experience with microbial surveillance systems, and we're very happy to have her here today. Over to you, Dr. Afreenish. Thank you. Thank you so much for the very long and nice introduction. So I share my slides and then I can start the discussion. I think I have almost 30 to 40 minutes for the discussion. Am I right? Yes, Dr. Afreenish. And then we have a question and answer session to follow up. Okay. Thank you. Thank you. So I think you can see the slides now. Yes, we can. Thank you. Thank you. Okay, so today we are going to discuss about the number of things. The first important message from my my expertise, the team has engaged me to talk on the microbial threats and the role of the public health microbiologist. And I'm really happy to see the young blood. They are all doing quite a good work and they are enthusiastic, but they need a direction. And I'm really happy with this platform that they have initiated this kind of discussion, so that they are our young students, they should know that what could be the possible area of work and what are the challenges that the society is facing and how can we best contribute in terms of our services to the community. So my area of expertise remained on the microbiology and the public health side. So I'm going to talk on the number of things in today's discussion. First, what are the microbial threats, challenges globally, and then again in the national level, and what a public health microbiologist can do in this field. So the microbial threats. So we all know microbes, there are different kind of microbes are there, including the bacteria, the viruses, the fungi, and the parasites. And I always say in this, in my discussions, that there are basically two worlds. One is our world and the other one is the world of the microbes. And you believe, you know, that every action has a reaction, that whatever we are, whatever we are trying to control these microbes, they are developing the mechanisms to protect themselves. And with this kind of struggle and a war, what we see is that there is a huge challenge that the humanity is facing right now from all the microbes. So this area needs to be considered very seriously, and this area should be the area of interest for all the public health people who are working in this area, because we have to think about the global health. We have to talk about the public health. This is important for the global security and eventually all of the impact towards the economy as well. So this makes our background that the microbes are there, but we have to be vigilant towards their approach towards us. So some of the biggest challenges that we have seen over the years is the viral diseases or the pandemics that we have seen over the long period of time. What we have seen is that very recently, everybody has faced the challenge of the COVID-19 pandemic, and what we have seen that shows how well our systems are prepared, how well we are prepared to consider these kind of infections, how can we best manage them. And COVID-19 में हमने देखा कि हमें कुछ challenges भी मिले, हमें कुछ countries के system अच्छे भी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे system वाले जो countries हैं, उनको भी एक challenge का सामना आना पड़ा different levels के ऊपर. So this is one of the examples that we all have recently seen. And then all the viral infections, they are contagious. They have a huge spread potential. And influenza virus is one of the commonest one. Among its category, we have seen the SARS virus outbreaks, we have seen the MERS virus outbreaks, we have seen Ebola outbreaks in West Africa and other African countries time and again. And we are seeing the Zika viruses outbreak as well. So the role of the climate change, the travel, the trade, globalization, they are all increasing the risk of emergence of these kind of viral infections. The other common threat is the foodborne and waterborne diseases.
So it's a huge list of the bacteria and the viruses and the parasites and the fungi. On the left side, you can see which are a threat to the human population. Among the bacteria, we see common outbreaks because of the salmonella, cholera, Escherichia coli, Campylobacter, Listeria. Again, from the viruses, very common in children, rotavirus, hepatitis A virus infection, norovirus. Among the parasites, we see the Giardia, Cryptosporidium, and Cyclospora. So among the fungal, again, Aspergillus infection, they are very common. So all these foodborne and waterborne pathogens, they are a matter of concern for the community, for the public health. So what are the basic preventive measures that are routinely suggested by the public health specialists? Is the handling of the food safely, following the proper hygiene measures, using the safe water, either filtered or boiled water, and avoid the cross contamination, and regularly inspect the food and the water sources. And in case of the outbreak, the role of the public health people, they have greatly increased in terms when it is an outbreak. So whenever there is an outbreak because of any foodborne pathogen, the requirement is that you have to go into the deeper understanding of the cause of the outbreak, what is the source of the contamination. And once you identify the source, you should contain it and try to do all the measures to eliminate it. The other should be monitor for illness, the people who have been suffered from the outbreak. Then community engagement is very, very important. Communicate with the public, with the community, that what are the control measures for the particular outbreak. And then implement the control measures at the policymaker level, at the different stakeholders level to understand, and then to prevent the future outbreaks of such kind. Bioterrorism agents, another a big challenge in terms of the microbial threats. Over time and again, we have seen some kind of intentional misuse of the biological agents like anthrax, smallpox, or the plague, and they have caused a huge damage to the humanity and the people around. Many of the times I quote this example of the anthrax letters. In 2001, the United States have experienced a series of anthrax attacks, and through the letters that have been sent to their government officials, and through these kind of a response, there were 5 people they have faced their death, and 17 others were infected with anthrax. So this is one example. If you go into the literature, you can see number and thousands of examples where the biological agents have been used for a very bad intention to cause some death or mortality or some kind of a panic within the community. Now, talking about the vector-borne diseases, very, very, very important from the public health perspective. There are many diseases which are carried on by the vectors, including the malaria, dengue, and the Zika viruses. They are carried, for example, they are carried by the mosquitoes. So the control of the vector at the community level, at the public level, is much important. But over the time, there is a climate change factor in the population, and this climate change that has changed the vector habitats, and that has increased the risk of the transmission. If we talk about the Pakistan, every year we see a huge outbreak of dengue in different parts of the country. Even malaria, we see large number of cases in the winter season. So the vector is there. But if we, from the public health perspective, if we are not doing the right measures at the right time, then we won't be able to control the vector, and we won't be able to control the disease in the community. Then there are other fungal and the parasitic threats which should be considered very seriously. The fungal infections that are of concern right now across the globe is the Candida auris infections and the Aspergillus infections. The major reason for these fungal infections is that we are facing a huge challenge in terms of the antifungal resistance to these pathogens. When we talk about the antifungals, so we have a limited options of the antifungals available with us, and as compared to the antibiotics. Antibiotics के लिए हमारे पास target areas काफी सारे हैं, but the fungal cell wall, it is close in structure with the human cell wall, apart from the chitin which is present in the fungal cell wall. So for the antifungals, when we talk about the antifungals, we have a very limited options available in terms of the antifungals. और जब हमारे पास limited option है और साथ ही हमारे पास fungi में resistance भी आना शुरू हो जाए, so then it is a challenge to control these kind of infections, and they cause huge mortality as well in the people.
And then is the other infections like malaria, toxoplasmosis, cryptosporidiasis, and they affect millions of people worldwide. And for all this parasitic and the fungal infections, the thing is about the climate change. The environmental conditions change and they make these pathogens to grow at a very rapid stage. Then the other factors include the travel and the migration. They increase the transmission or transmission among the community. The other threat that we need to discuss is the microbial contamination of the environmental sources. Many of the time, we see that there is not a safe disposal of the waste from the industrial activities or from the agriculture activities. So that if even from the hospital, if the waste is not properly removed or it's not properly handled, it always causes a serious threat to the community or in the wastewater. Whenever the antibiotics they go in the wastewater, then we can see that there is a challenge to handle this kind of situation. And excuse me, I take a little break. I'm going to take some water. It's a bad throat. Just give me a minute. I'd like to remind all of the participants that you can definitely ask more questions in the group chat. Thank you. And also, I have shared some links to the resources Dr. Ilham was talking about. Those are also in the group chat. Sorry, the chat box. I will also share them in our WhatsApp group as well. I'm sorry, I'm back again. I'm really sorry about that bad cough. Perfectly So fine. we are talking about the microbial contamination of the environmental sources. हॉस्पिटल का वेस्ट है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स डिस्पोज ऑफ हो रही हैं एंड दे आर गोइंग डायरेक्टली इनटू द water and it can lead to the effect of the antimicrobial resistance that we are going to discuss in the next slides. अच्छा जी, antimicrobial resistance, ये तो this is one of my favorite areas to talk on. Antimicrobial resistance is the biggest microbial threat that we are facing these days. So what is antimicrobial resistance? I guess many of the public health microbiologists, they must know about it. And this is actually the ability of the bacteria or the microbes to grow in the presence of the antibiotics. That they have developed the mechanisms over the period of time that they can evade the effect of the available antibiotics. So this is a really serious concern. On one end, we are trying to develop the antibiotics, and on the other end, we see that the microbes, they have stopped acting, they have stopped responding against those antibiotics. अगर हम बात करें antibiotics की, तो एक antibiotic को market में आने में it takes around 3 to 10 years. Mainly it around 8 to 10 years, or if we have the AI technologies or the different in silico approaches, then we can go a little quicker way. But many of the times it takes around 8 to 10 years. So after a research of such a long time of 8 to 10 years, what we see is that whenever the antibiotics is launched in the market, we see a therapeutic failures. We see that the patients and they have stopped responding to the antibiotics or the antifungals. Now this has become the challenge for the manufacturers to go towards the to develop more antibiotics or antifungals. So on one end, what we see is that we have a limited treatment options available with us. And on the other end, we are seeing that the microbes, they are getting stronger over the period of time. There's a natural microbial adaptation within them. There's a number of genetic mechanisms present within the microbes that they can acquire the resistant genes from the neighboring bacteria or from the environment. And the other biggest causative agents is the human actions that we are going to discuss in the next slides. So here you can see how we are facing the challenge towards the antimicrobials. On the left side, you can see that antibiotics, they since penicillin was discovered in 1920, then there's a mass production in 1943. Since then onwards, we see there's a production of cephalosporins, carbapenems, quinolones. And on the side by side, we see a resistance against all these antimicrobials.
I guess this is a very simple thing, this simple slide to make you understand that how the antibiotic resistance is going to occur. There's bacteria which have the resistant genes within them, and these bacteria, they can survive for a longer period of time. And these bacteria can act as a carrier within a person without causing any sign and symptoms, but they can retain in the human body for a longer period of time. And also these bacteria, they have the potential to spread these resistant genes to the neighboring bacteria. And this condition persists for a longer period of time. And eventually we see that the bacteria, they have, or the fungi, they stop responding to the antibiotic or the antifungals that we use against them. So what are the major causes of AMR? This should be the topic of research or topic of concern or topic of interest for the public health people. That there is one area on the laboratory side, lab वाले लोग अपने end पे laboratory को diagnose कर रहे होते हैं, लेकिन public health microbiologist का role और public health के जो लोगों का role इस area में बहुत important होता है, that they look at the other factors, the causes, the impact, and then they look at go for the further solutions. और वो solutions के बाद वो they can help the policy makers to control the issue or the problem that the community is facing. So first, biggest cause of AMR that we see very commonly is the over-prescription of the antibiotics, not only in the human sector, but also in the animal sector, in the livestock. In the livestock, what is a challenge? There is a huge use of the antimicrobials in terms of the growth promoters. Growth promoter के तौर पे antibiotics इस्तेमाल की जाती हैं. These antibiotics, they can retain in the body of the animals, and these animals are then further consumed by the humans. So now this is a vicious circle. Antibiotics उधर persist करती हैं और हमारी body में भी communicate हो जाती हैं. तो इस तरह से there is a challenge to handle these kind of infections, और फिर हमारे पास कोई resistant bacteria आ जाता है तो हम उसको handle नहीं कर पाते. ह्यूमन सेक्टर में तो बहुत ओवर यूज है. पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल व्हिच इज वेरी कॉमन. देन अगेन देयर इज अ जीपी प्रैक्टिस एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ट्रीट द सिंपलर इन्फेक्शंस इवन विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. तो नाउ दिस इज अ चैलेंज. दूसरा जो बड़ा चैलेंज हमें नजर आता है AMR को बढ़ाने में, वो है कंप्लायंस. पुअर कंप्लायंस और पुअर इनटेक ऑफ द एंटीबायोटिक्स और द एंटीमाइक्रोबियल्स बाय द पेशेंट्स. पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है आफ्टर देयर सिम्टम इज ओवर, लाइक दे आर फ्री फ्रॉम द फीवर. अगर कुछ फीवर खत्म हो गया, बॉडी एक्स खत्म हो गई, दे स्टॉप टेकिंग द एंटीमाइक्रोबियल्स. अगर उनको 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, दे टेक द एंटीमाइक्रोबियल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days or 3 days and then they stop it. But they never know that the bacteria is still present in their body, and they have the bacteria still present in the body, and they have tasted the flavor of the antibiotics that have been given to them, and now they are developing the mechanisms to prevent themselves from the further attack by the antibiotics. So now this is the biggest challenge. So patient से जब भी आप बात करते हैं तो ये हमें बार बार सुनने को मिलता है, और इसको ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. Poor infection prevention and control practices in the healthcare facilities, जिसकी वजह से अगर तो पुअर IPC मेजर्स हैं तो एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डॉक्टर्स को इन्फेक्शन, इवन फ्रॉम द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से पेशेंट को इन्फेक्शन जाता है. तो विच इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. Lack of hygiene and poor sanitation in the environment, another big causative agent for the antimicrobial resistance. हम बात तो करते हैं AMR की. AMR से हमें नुकसान क्या हो रहा है? What is the impact on the human health? So this is one of the famous quote by the Director General of WHO, और मैं इसको पढ़ूंगी कि this is a post antibiotic era, which means in effect an end to the modern medicine as we know it. Things as common as strep throat or a child's scratched knee could once again kill. So now this is alarming. एक time था pre-antibiotic era, then the penicillin came, and then there's a huge bulk of antibiotics which are available in the market. और अब we are gradually moving to the post-antibiotic era, and this has been seen by the higher organization like WHO, CDC, and they keep on talking about the importance of controlling this pandemic. What are the impacts on the human health? अगर तो कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या फंगस से इन्फेक्शन हो जाती है तो पेशेंट को दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्गर ट्रीटमेंट, and many of the times we see higher mortality.
many of the times we need to go towards the expensive drugs. We need to go towards the intravenous drugs as compared to the oral drugs, which are much more expensive. Then it all leads to the increased burden on the health system. And patient in the end, if they are affected by the resistant microorganisms, they can act as a reservoir for these organisms, and which can be later on passed to the community or the healthcare workers. Global impact of the AMR या threat की बात करें तो now the WHO it has included AMR antimicrobial resistance among the top 10 public health threats, and they call it as a silent pandemic. एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 2016 में by Lord Jim O'Neill, and they have mentioned this thing that by 2050 10 million deaths होंगी हर साल just because of the AMR. और इकोनॉमी की बात करें तो we will be losing $100 trillion particularly due to the drug resistant infections. तो WHO ने इस इशू को कवर करने के लिए they have taken serious steps. They have developed the global action plan in 2015, and they have asked all the member countries to develop the national action plans on AMR. So the global action plan है, it is a tripartite agreement. Not only the human health sector, but also FAO, Food and Agriculture Organization, and OIE, which is working towards the animal sector. They all combine together because it's not one area's responsibilities. It's a very complex thing. AMR includes the human health, animal health, and the environmental sector, and they all need to be collaborated to develop the global action plan. अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था back in 2015 and 2016, and that survey has highlighted some of the red flags. उस सर्वे की फाइंडिंग्स में ये था कि 5,000 registered antimicrobials, which is quite a large number, which are present in Pakistan right now. There is a very common practice towards a self-prescription, 51% at that time. Back in 2015, 2016, it might have increased right now. 75% of the patients receive antibiotics, चाहे उनको जरूरत नहीं भी थी. अगर ये हॉस्पिटल का डेटा था कि जिसमें उनको पता लगा कि 75% of the patients they are taking unnecessary antibiotics, and there is a presence of large number of the quacks which are prescribing the wrong antimicrobials to the people. Pakistan comes among the top 10 livestock producing countries, or either there is a huge use of the antimicrobials in the livestock sector. अगर इसी के बारे में जब इनिशिएटिव लेना शुरू किए तो वो मैंने आपसे जिक्र किया कि ग्लोबल एक्शन प्लान के अगेंस्ट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, and then there is a initiative to develop the global health security agenda and the international health regulations. Generally, कुछ statistics की बात करें तो Salmonella typhi, which is the causative agent for the typhoid, उसके लिए हमारे पास over the time we have seen huge resistance to other ceftriaxone. 18% से increase होके 60% हो गई. अगर हम methicillin resistant staphylococcus aureus की बात करें तो हमारे staph aureus में से 75% cases methicillin resistant होते हैं. इसी तरह अगर हम Acinetobacter baumannii की बात करें तो उसमें हमें कार्बापेनम्स में रेजिस्टेंस नजर आना शुरू हुई, जो कि 26% रिपोर्टेड थी इन 2019. अगर हम पाकिस्तान में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की लिस्ट की बात करें तो वी हैव ऑल काइंड ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट अमंग द पेशेंट्स, इवन इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. We see multi-drug resistant gram-negative bacteria. We see ESPLs. We have seen New Delhi metallo-beta-lactamases bacteria. Tuberculosis, MDR tuberculosis, very very common. Pakistan में MDR और XDR tuberculosis के huge number of cases they are present over here. इसी तरह हमारे पास extensively drug resistant typhoid के cases मौजूद हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया 18% से increase होकर 2-3 सालों में 60% तक उसकी percentage चली गई है. The National Institutes of Health, which is an old institute established in 1965, and they have endorsed to the Global Action Plan on AMR. And NIH has been designated by the Ministry of Health as the national focal point for the AMR control, and they are doing number of activities in their national reference laboratories and in the National Coordinating Center for AMR and IPC. 2016 में एक नेशनल AMR स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया गया है,
और 2017 में एक ऑपरेशनल नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR डेवलप हो चुका है. The National Action Plan on AMR, it is a very holistic approach towards the controlling of the antimicrobial resistance. It's not talking only on one sector, but it has a huge holistic approach on all the 5 areas. अगर पहले एरिया की बात करें तो वो फोकस करता है कि क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट एडवोकेसी अमंग द पीपल. लोगों को जब पता नहीं होगा कि ये इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, इट्स अ बिगेस्ट थ्रेट, तब तक उस पर कोई काम भी नहीं करेगा. दूसरा इसका एक्शन ऑब्जेक्टिव है कि हमें डेटा जनरेट करना है सर्वेलेंस के थ्रू. वी नीड टू जनरेट डेटा and this data needs to be creates an evidence for the policy makers to do certain activities or actions. थर्ड बात होती है कि हमें अपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स को स्ट्रेंथन करना है. फोर्थ ऑब्जेक्टिव कहता है कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल्स नॉट ओनली इन द ह्यूमन सेक्टर बट आल्सो इन द एनिमल सेक्टर. And then we have to be last area, which is very important for all the public health people who are sitting over here, that we have to invest more on the research and the development. We have to measure the burden of AMR. We have to evaluate the investment needs, and we have to establish the procedures for the participation. So this is the area which is neglected. Very less work has been done towards the research and development, and you all can contribute to all these areas. Some of the activities that NIH has been conducting over a period of time. There's a World Antibiotic Awareness Week, which happens every November, 18th to 24th of November. And it is celebrated it is celebrated across the globe, not only in Pakistan by WHO. And Pakistan also participate in these activities, try to create awareness in the community, in the healthcare sector, in the hospitals, and among the public health professionals. Again, there's a newsletter that has been published every quarterly by the institute. Some posters and some other activities, they are mentioned over here. Then again, virtual journal club. This activity happens every month. It happens on every second Wednesday of the month. And we are doing it for quite a long period of time. We discuss any relevant article and we try to share the information with all the people around. Then there's a website that has been developed. You can go and log into the website and learn more on the AMR. It's by the name of learnamr.com, and it has been launched in March 2022. It has 15 different e-modules, and you can log in on any of the modules and you can go through the course and you can learn and you can get a certificate at the end as well. सर्वेलेंस, जिसमें मैंने आपसे बात की कि डेटा कलेक्शन की जरूरत है. NIH इज डूइंग नंबर ऑफ एक्टिविटीज. पूरे पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट भी होता है, उसको डिस्कस भी किया जाता है एट हायर फोरम्स. स्टूवर्डशिप का ऐसा एरिया है कि जिसके ऊपर काम अभी बहुत कम लेवल पे हुआ है और जिसके लिए हमें अब पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत सख्त जरूरत है. WHO ने एक लिस्ट जनरेट की है बाय द नेम ऑफ अवेयर. Aware is a classification of the antimicrobials. They have classified the antimicrobials in 3 groups. A for excess, those antibiotics that should be in excess to the healthcare professionals. WA stands for the watch. Watch category of antimicrobials are the ones which should only be given to the patients once you have a confirmation from the laboratory side. And then that category is a reserve. There's a certain groups of antibiotics that should be reserved and they should only be utilized whenever there's a strong indication towards the use of those antibiotics. And this reserve list mainly includes all the broad spectrum antibiotics or the antifungals. Antimicrobial prescribing guidelines for Pakistan, they are in development process, and then many of the activities towards infection prevention and control, they are being conducted. So I'll stop over here. I think if there is any question, our moderator is over here. I can stop for a minute and then I can go towards the second half of the discussion today. Okay, so there are actually a couple of questions, Dr. Afreenish. By the way, the first session was incredibly informative, and thank you so much for that. So the first question is, what steps can public health systems take to prepare for a potential bioterrorism attack or any pandemic for that matter that involves microbial agents? So, yeah.
That's the first question. थैंक यू, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। देखें, अब आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ को, तो आपको पता होना चाहिए, और यही चीज हम आगे स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे, कि आप लोगों को अगर कोई पेंडेमिक है या अगर कोई पोटेंशियल बायोटेररिज्म है, तो उसको अप्रोच किस तरह करना है। तो ये डिफरेंट एरियाज है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द पेंडेमिक, पेंडेमिक होना मतलब कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, दैट इज द वर्क ऑफ द लेबोरेटरी पीपल। लेकिन जब एक पेंडेमिक हो गया, तो उसके बाद पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स का काम शुरू हो जाता है कि अब आपने उसको कम्युनिकेट करना है टू द पब्लिक। देन you can be a specialist in this area, or there are a number of good organizations which are training the people on this thing। आपने उसको लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। लोगों से कम्युनिकेशन के बाद लोगों को आपने पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से बताने हैं। कोविड में आपने देखा होगा, बार बार डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस जनरेट होते थे, डिफरेंट सिस्टम शुरू किया गया। मेरे ख्याल है वो कॉल जब करते थे उसके पर एक टोन आना शुरू हो गई थी। एक वो एरिया शुरू हुआ। उसके बाद आपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम का काम ये है कि डिजीज अगर है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। उसको मैसेज में अगर आपने मैसेज तो दे दिया, लेकिन वंस यू सी अ पॉजिटिव केस, अगर कोई मिल जाता है पेशेंट, तो आपने उसको आइसोलेट कैसे करना है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से लेके हॉस्पिटल लेवल तक डिफरेंट सेक्टर्स में कोविड-19 इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, कि किस तरह से हम ट्रियाज करते थे, पेशेंट्स को सेपरेट करते थे, आइसोलेट करते थे, और फिर उसको जब हॉस्पिटल में वो एडमिट था, तो तब हमने कौन से मेजर्स लेने थे। So public health people, they can do a lot in the terms of control and understanding of the system particularly. Or world has changed the scenario. So up to everybody is moving towards this public health approach, towards a preventive approach. All right, thank you so much. So I'll ask you one more question before we move on, and that is, could you briefly explain how antibiotic use in agriculture and animals leads to the emergence of resistant bacterial strains? Sorry. क्या सवाल क्या है? Antibiotic use in agriculture, how does that in animals, how does that lead to resistant bacterial strains? अच्छा, ठीक है। देखो, ये जितना है ये इट्स अ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। दुनिया का एक चेंज हो गया सिनेरियो कि ये वन हेल्थ है। इसमें होता क्या है कि फॉर आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली, ठीक है। एक इसमें आप लफ्ज लिख लो, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स। ये किस तरह से इमर्जेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी लिविंग पाकिस्तान में इसकी एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसीलिए मैं उसको बता रही हूँ। एनवायरनमेंट को कहा जाता है थ्रेट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब उसमें क्या चीज है कि अगर सैल्मोनेला टाइफी की बात करें, 2016 का आगा खान यूनिवर्सिटी का आपको एक आर्टिकल भी ऑनलाइन मिल जाएगा, कि वहां पे उनको वेस्ट वाटर से कुछ सैल्मोनेला टाइफी के आइसोलेट मिले, और साथ ही उन्होंने ई कोलाई, वहां पे एक और पैथोजन मौजूद था, उसको भी पिक हुआ। और उन्होंने ये देखा कि सॉरी, उन्होंने ये देखा कि जो सैल्मोनेला टाइफी है उसके पास एक रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, और वो जो वेस्ट वाटर में ई कोलाई मौजूद है, ये उससे उसने एक्वायर किया है। तो ये रोल है जी कि आपको ये डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह से एक एक पैथोजन दूसरे पैथोजन, और ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये फीको ओरल पैथोजन है, ठीक है। ये फूड बॉर्न पैथोजन है। ये लोगों ने प्रॉपर हाइजीन मेजर्स नहीं किए, दे इंजेस्ट द पैथोजन एंड दे गॉट इन्फेक्टेड विद द टाइफॉइड। तो इस तरह से एक चेन ऑफ इन्फेक्शन है कि एक एनवायरनमेंट में चीज हुई, उस एनवायरनमेंट की वजह से जो पैथोजन है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ ड्यू टू द पुअर हाइजीन मेजर्स, और उसके बाद जो है ना, वो बंदा एक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गया। इसी तरह हम बात करें एनिमल सेक्टर्स की। एनिमल सेक्टर में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। जिन्होंने फार्म रखे हुए हैं, वो अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी फीड में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे एंटीबायोटिक्स डालते हैं। दैट एंटीबायोटिक्स दे परसिस्ट इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। अगर हम चिकन्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी बॉडी में इट रिटेन्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, and those farm chickens, they come into the market and people consume it, and then we are unknowingly consuming those antibiotics in our body। अब क्या होता है कि हम जब हमारी बॉडी ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक्स के साथ आ चुकी होती है, एंड व्हेन वी गेट इन्फेक्टेड विद एनी बैक्टीरिया, तो हमें वो हमारे बॉडी से वो इसका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो जाता है कि ये एंटीबायोटिक ऑलरेडी है, हमने इस एंटीबायोटिक का हमें पता चल गया, हमने इससे अपने आप को सेव करना। तो दिस इज अ कम्प्लेक्स विशियस थिंग, और इसी में हमारा रोल है कि हम इसको किस तरह से चेन को ब्रेक कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Afreenish. I think we can begin with the second part of your session and then rest of the questions at the end. Thank you. Thank you. जी जनाब, तो पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जितने सारे हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, वो ये क्या कर सकते हैं।
पहले तो आपको ये समझना है कि पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टर्म पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में पहले से यूज होती आ रही है। पब्लिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अलग रखा जाता है, पब्लिक हेल्थ को अलग रखा जाता है, लेकिन ओवर द टाइम दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, और ये हो भी रहा है। अगर आप पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स की बात करो तो उसमें इन्फेक्शियस डिजीजेज माइक्रोबायोलॉजी अब पढ़ाई जाती है। इसी तरह अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करो तो उसमें अभी तक पब्लिक हेल्थ के एंगल को इतना ज्यादा छेड़ा नहीं गया, लेकिन स्टिल उसमें अप्रोचेस जरूर डिस्कस की जाती हैं कि हाउ वी कैन कंसिडर। So to become a public health microbiologist, you need to have a bachelor or master's degree in the biology, in the microbiology or any health sciences. Again, you have to have an additional degrees towards the public health side. And the approach is important. जब आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ लेंगे, लेकिन पब्लिक हेल्थ को जब आपको ब्रॉडर एंगल पे समझ आने लगेगा तो आप उसको एप्लीकेशन भी समझ सकेंगे। So you have to be very detail oriented. You have to be very precise. You have to look into the details of any kind of a problem. So what a public health microbiologist is doing, as you have already discussed in one of the chat questions, कि भाई पेंडेमिक में क्या रोल हो सकता है या फिर किसी और एरियाज में क्या रोल हो सकता है। इसी तरह अगर बात करें तो जो रिसर्चर का काम यही है कि स्प्रेड ऑफ डिजीज को देखना। अगर वो डिजीज फैली है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलरा की बात कर रहे हैं तो कॉलरा के केसेस कराची में हर साल 10-15 केसेस एक आउटब्रेक की शक्ल में निकल आते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसको अंडरस्टैंड करना है। एंड अगर तो वो 10-12 केस है तो एक लिमिटेड है तो ठीक है, अगर तो वो पूरी कम्युनिटी में एक वाटर सोर्स कंटेमिनेटेड और पूरी कम्युनिटी को फैल रहा है, देन दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि हमने उसको किस तरह कंट्रोल करना है। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स द हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज। जितने हमने अभी थ्रेट्स की बात की, चाहे वो आप बायो सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, बायो टेररिज्म के हवाले से बात करें, पेंडेमिक्स के हवाले से बात करें, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसमें क्या सिचुएशन है उसकी बात करें, लेबोरेटरियों में बात करें तो वहां पे अगर कुछ स्पिल हो जाता है जिसकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन है, दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। And they play an important role in controlling the communicable diseases and any health hazards. Or outbreaks में very important role of all the public health professionals to to control the outbreak first, and then to evaluate the policies and strategies to prevent the future outbreaks in the community. जो पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी का मैंने आपसे जिक्र किया, it's not totally lab related thing, but they have to have this understanding that what are the pathogens, how we can isolate them, how we can characterize them from the environmental samples or from the routine clinical samples, and what techniques that can be used to identify these microorganisms. अब ये लेबोरेटरी के लोगों का काम है टू आइडेंटिफाई इट, लेकिन अगर पब्लिक हेल्थ के लोगों का ये काम हो सकता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स के ऊपर लोगों को अवेयर करें कि जहाँ पे उनको क्विक टर्न ओवर टाइम मिल सके। कुछ हमारे कन्वेंशनल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स चल रही हैं जो कि 2 से 3 दिन में हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करके बताती हैं, but over the time what we have seen, there are a number of the automated systems have been launched which can identify within 4 to 5 hours. तो ये आपको जो क्विक आइडेंटिफिकेशन है वो हेल्प कर सकती है टू कंट्रोल द डिजीज और द आउटब्रेक। इन्वेस्टिगेटिंग द डिजीज आउटब्रेक्स, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल दे कैन प्ले अ वेरी की रोल इन दिस थिंग। They need to collaborate with other stakeholders like epidemiologists to investigate the disease outbreak, and they have to analyze the data to identify the sources and the modes of transmission. Then very important, यहाँ तक तो हो गया ना कि हमने डिजीज कंट्रोल कर ली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रिवेंशन के मेजर्स को और कंट्रोल मेजर्स को डेवलप करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल कैन डू, एंड दे कैन डेवलप द गाइडलाइंस कि कैसे कोई एक कंट्रोल मेजर, फॉर एग्जांपल कॉलरा की बात करें तो कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स डेवलप कर सकते हैं, और फिर हमको मॉनिटर कैसे करेंगे, हमको इवेल्युएट कैसे करेंगे। कंडक्टिंग द रिसर्च एंड द सर्वेलेंस, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दी थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, सर्वेलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वेलेंस इज द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द डेटा, एंड वो डेटा कलेक्शन चाहे आप लेबोरेटरी से ले लें, वो डेटा चाहे आप हॉस्पिटल के बेड साइड के क्लिनिक बेड साइड से ले रहे हैं, वो डेटा अगर आप एनिमल सेक्टर में चले जाते हैं तो एनिमल सेक्टर में एंटीबायोटिक्स जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है वो वाला डेटा भी कलेक्ट हो। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो उसमें कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं उसका डेटा। So there are in every area the surveillance is important,
एंड सब डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को मीनिंगफुल एनालाइज करना, उसमें से कुछ एविडेंस जनरेट करना और वो एविडेंस फिर डिस्कस करना विद द हायर अथॉरिटीज टू टेक सम सर्टेन एक्शंस. Communicating with stakeholders, this is what I have just discussed with you. It's not only talking with the higher level. The other thing is that you have to translate this data in a very, very meaningful message to the public health. Public community को आसान ज़बान में उस message को communicate करना, this is much needed. You have to generate the educational material, IEC material, flow charts, posters, banners, standees, लेकिन वो इस language में हो कि लोगों को अब समझ आ सके. The important step that a public health professional should do, that they should keep an eye on whatever is happening. सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड्स को आप मॉनिटर करें. अगर कॉलरा के ऊपर मेरा काफी काम है, हम कॉलरा के ट्रेंड को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अगर इंडिया में केसेस हैं, बांग्लादेश में केसेस हैं, नेबरिंग कंट्री में केसेस हैं, तो उनका क्या पैटर्न चल रहा है और हमारे मुल्क में इसका क्या ट्रेंड आएगा. तो देयर आर नंबर ऑफ द मॉडलिंग स्टडीज दैट आर बीइंग कंडक्टेड, और उसमें भी एक एरिया है जिसके ऊपर कम्प्लीटली काम किया जा सकता है, अपनी आप स्पेशलिटी बना सकते हैं टूवर्ड्स दी डिजीज मॉडलिंग एंड कैन अंडरस्टैंड. अब तो एआई की वजह से वी हैव अ नंबर ऑफ वेरी गुड डिजीज मॉडलिंग स्टैटिस्टिक्स विच आर अवेलेबल. आप उनको यूज करें एंड यू कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स. हाँ जी, दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इनटू अटेंशन. सिस्टम थिंकिंग अप्रोच. मैंने भी खैर ओवर द टाइम वेरी रिसेंटली हैव लर्न्ड दिस थिंग. So what is the difference between the conventional thinking and the system thinking? Conventional thinking में तो हम ये सोचते हैं ना कि अगर कोई पॉजिटिव एजेंट है और बाद में उससे प्रॉब्लम हुई है, तो दे आर ऑब्वियसली कनेक्टेड. हमें एक सीधी अप्रोच होती है कि अगर तो ये कंटेमिनेटेड था फूड सोर्स और ये कम्युनिटी है जो कॉलरा से इन्फेक्ट हुई है, तो दिस मीन्स कि दे हैव कंज्यूम दिस थिंग और ये कनेक्ट हो गए. सिस्टम थिंकिंग अप्रोच इज टोटली डिफरेंट. इसमें आपको बिगर लेवल पे सोचना है कि देयर माइट बी अदर फैक्टर्स which are engaged in all this process. So it seems a very direct link, but the other thing is that what has led to the use of this kind of contaminated water. वो जो पानी अगर गंदा था तो क्यों गंदा था, फिर वो अगर पानी क्लीन होना था, अगर उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स जानी थी तो वो क्यों नहीं गई. फिर उसके बाद जो कंज्यूम लोग कर रहे हैं, तो वाई आर नॉट बी एबल टू फॉलो द हाइजीन मेजर्स, या वो फिल्टर्ड वाटर या फिर वो क्लीन वाटर क्यों नहीं यूज कर पा रहे. So this is the system thinking approach. In the conventional thinking, others are to be blamed. And in the system thinking approach, every stakeholders need to be considered seriously. तमाम लोगों का role clear होना चाहिए. In the conventional thinking, we think about the short-term success that leads to the long-term success. And but in the system thinking, most quick fixes yield no difference and make matters worse over the time. In the conventional thinking, we think that we have to optimize the part. लेकिन हमें जो सिस्टम थिंकिंग है उसमें ये कि अगर देखें, अभी हम कॉलरा की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम ये बात करते हैं कि जी लेबोरेटरी सही डायग्नोज कर दे. हम एक बात ये करते हैं कि लोगों को सही कम्युनिकेट हो जाए. जब कॉलरा का चैलेंज आया, आई हैव वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल कॉलरा कंट्रोल स्ट्रेटेजी, तो हमें ये नजर आता था कि there is a gap between communication between the different sectors. लैब वाले अपनी जगह सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो पाइपलाइंस को अपनी जगह या वाटर सोर्सेज को अपनी जगह सही जगह चेक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस कॉलरा. द रीजन इज दैट they are working in silos. So that improving the relationship, improving the coordination and bridging the gaps is most important when we talk about the system thinking and the public health approach. And this is a very difficult approach, I must tell you. कि लोगों को उनके एरिया से निकालना, make them to work with each other, this is a challenge. So I think this is the last slide. I come to the end of this today's discussion. हमने बात की microbial threats के बारे में. They are there and they keep on growing every other day because of the use of the antibiotics and our own practices, and then they need a special attention. दूसरा हमने बात करनी है पब्लिक हेल्थ को अगर हमने समझना है तो we have to understand the system thinking approach की तरफ जाना है. And there are different, very, very number of different techniques. ये तो मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इसके पीछे एक बहुत सारी theories हैं, different models हैं जिनको आप apply करते हैं to understand something. And being the public health microbiologist, they have to understand the disease dynamics. So if we all work together on this area, we can help to
promote the health of the communities and protect their health. So with this, I Thank you. come to an end. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Afreenish, for sharing your expertise on this incredibly important topic, and something that I think in Pakistan is so important to focus on. And I think we don't really understand most of the time as healthcare workers what goes on and what are the different factors that actually influence disease and how we can go outside of our practice to actually correct them. So I'm just going to ask you one or two more questions that the audience has. And the first one is that what are the interventions public health officers can make to cater to antimicrobial resistance in a country like ours, jahan antibiotics are available over the counter? अच्छा, एएमआर में अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो उसमें आप से जो रिक्वायरमेंट होगी वो है कि क्वालिटेटिव रिसर्च। एक तो हमारे पास ना इस टाइम करेंटली एविडेंस नहीं है, डेटा नहीं है। हम बार बार बात करते हैं कि हम प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस बना लें, हम जो है ना कोई एक पॉलिसी या कोई कुछ और चीज़ बना लें। उसमें मैंने भी चैलेंज पेश किया। आई बीन वर्किंग फॉर इन दिस एरिया फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च और स्टडीज नहीं है, लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। ये दे ओनली थिंक वर्किंग इन द लेबोरेटरी इज द ओनली गुड अप्रोच टूवर्ड्स समथिंग। लेकिन आपको कम्युनिटी से डाटा कलेक्ट करना, सर्वे स्टडीज, कैप स्टडीज लेना, उसके बाद आपको पॉलिसी मेकर स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशंस करना, फोकस ग्रुप स्टडीज करना। तो देयर आर डिफरेंट, ये दिस इज वन अप्रोच, ठीक है, जिसके बारे में आप पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल एएमआर में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो बिहेवियर चेंज स्ट्रैटेजीज है ना, उसमें अभी हम लैग कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, इवन WHO ने दे हैव चेंज देयर अप्रोच टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ एएमआर। अब वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोचेस की बातें करते हैं, वो अब सिस्टम की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि पेशेंट के हवाले से। तो अगर उसको देखा जाए, और बिहेवियर चेंज स्ट्रैटेजीज पे बहुत कम काम है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करना, आपको एक अच्छा मैसेज जनरेट करना, आपको कोई एक मीनिंगफुल यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन निकाल के देना है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी को सीधा सीधा ये कह देते हैं कि मॉलेज के मशवरे के बगैर दवाई ना इस्तेमाल करें, तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक बंदा है जिसको सुबह मजदूरी पे भी जाना है, काम पे भी जाना है, तो उसके लिए उसको सुबह हर हाल में अपना बुखार खत्म करना है और उससे नौकरी पे जाना है। तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि भाई उसको क्या पड़ी है कि मॉलेज के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। ही कैन इजीली गो टू द फार्मासिस्ट एंड दे कैन टेक द एंटीमाइक्रोबियल। तो एक चैलेंज हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, इनका ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन को भी हैंडल करना है। एक लेजिस्लेशन की एब्सेंस तो है जो हमारे चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ जो हमारे बिगेस्ट चैलेंज है कि फार्मासिस्ट फार्मेसी में मौजूद है कि नहीं है, उनको एंटीबायोटिक्स का टाइप पता है कि नहीं है। क्वालिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते होगे फार्मेसी के ऊपर गए हो, यू गो एंड आस्क भाई ये मुझे फलानी एंटीबायोटिक दे दें, वो डेफिनेटली पहले कोई और एंटीबायोटिक निकाल के आपको देता है, जो कि कहीं और किसी किसी भी कंपनी ने बनाई होती है, जिसकी कोई क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई होती। तो वो एक चैलेंज है कि वो आप खा भी रहे होते हैं, इफेक्ट भी नहीं आ रहा होता, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो उन एंगल्स को समझना और उन पे काम करना एएमआर के लिए बहुत 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 जरूरी है। सर्वेलेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। Thank you so much for that. One thing that I think is a running theme throughout our webinar series, and which I've noticed from multiple speakers, is that the quality of research is incredibly important in public health. And I think that is what ultimately informs when we want to advocate for some sort of change. And I believe that even in Pakistan, अगर हम लोग इस over the counter antibiotic वो उसको हम लोग थोड़ा सा business को रोकना चाहते हैं, उसके लिए we have to really work hard to do a lot of research along with the behavioral change that you recommended, that is something that we should focus on as well. One more question is as dentists, we see a lot of patients that come to us as well, and they're like, "Doctor Saib, मैंने तो antibiotic खा ली और मेरी दर्द रुक गई." That for simple toothache, they take an antibiotic and they say that is the only thing that works, nothing else works for us. So can you talk a little bit about the roles of dental practitioners in controlling AMR as well? बिल्कुल। एक तो ना डेंटल प्रैक्टिशनर जब भी कोई भी डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें अगर अपनी प्रॉपर हाइजीन मेजर्स फॉलो कर रहे हैं ना, आईपीसी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जहन में ये जो एलिमेंट है ना कि हमारे इस प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन हो सकती है, वो जो फियर है, वो अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस कंट्रोल कर लेंगे तो आपको वो फियर नहीं होगा और आपको बार बार उसको एंटीबायोटिक से एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। हम ये फियर ही होता है ना, एक सर्जन एक बहुत बड़ी सर्जरी करके चला जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि बाद में किसी और ने हैंडल करना है, किसी और ने ड्रेसिंग करनी है, एंड यू नेवर नो, उनको होता है कि सक्सेस स्टोरी जनरेट हो। तो वो उस चीज को फियर के लिए वो एंटीबायोटिक नहीं देते। एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन जो भी होनी है ना हो। तो फर्स्ट डेंटल प्रैक्टिशनर्स को चाहिए कि पहले अपनी प्रॉपर आईपीसी मेजर्स को बाहर हाल हर सूरत को, हैंड हाइजीन को हम बार बार देखते हैं टोटली निग्लेक्टेड, कि एक मरीज से दूसरे मरीज पे जाते हुए कहते हैं जी हैंड हाइजीन फॉलो की जाए, कितनी दफा फॉलो की जाती है यू नेवर नो, और कुछ अच्छे सेटअप्स में हो भी रहा है। तो एक तो आप अपने एंड पे पहले अपनी प्रैक्टिसेस बेहतर करें, और दूसरा साथ में एजुकेट द कम्युनिटी, एजुकेट द पीपल। आप उनको ये बताएं कि भाई ये पुराना स्कूल, ओल्ड स्कूल थॉट था कि भाई ये जो है ना इस तरह से करेंगे तो यही होगा। तो आप देखो हमारे मुल्क में लिटरेसी इज अ बिग चैलेंज ना, लोगों को अंदाजा नहीं है। काफी मैं फोकस ग्रुप स्टडीज और डिस्कशंस करती रहती हूँ, तो वो आते हैं मरीज के भी हमें सख्त वाली दवाई दे दें तो हम ठीक हो जाएंगे और इसी से ठीक होंगे। एक तो इट्स अ माइंडसेट, तो उसको ब्रेक करने की जरूरत है कि आप पहले तो दवाई के मुज़िर असरात लोगों को बताएं। लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि एंटीबायोटिक खा लिया उससे किडनीज पे क्या इफेक्ट हो रहा है, रीनल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आई साइड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कानों पे क्या इफेक्ट हो रहा है। दे कीप ऑन टेकिंग, और इवन डायरिया डेवलप हो जाते हैं, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। तो पहले उनके मुज़िर असरात बताएं कि ये आपके लिए कोई वो नहीं है, बड़ी कोई फायदेमंद चीज नहीं है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। सो यू एजुकेट द पीपल, अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग चार, हाँ, 2 एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करे थे, आप एक एंटीबायोटिक पे आ जाएंगे। ओवर द टाइम आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम कर लेंगे। Okay, thank you. And Dr. Afreenish, the last question is, are there any research opportunities for undergraduate students when it comes to joining professionals such as yourself, to learn a little bit more about public health and contribute to projects like the ones that you are also taking care of right now? जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। देखो हमारे पास बहुत सारे इंटर्नशिप के लिए भी लोग आते हैं। इंटर्नशिप सिर्फ एनआईएच में नहीं, एचएसए में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। तो यू द स्टूडेंट शुड कम एंड दे शुड डू एन इंटर्नशिप। और अब वो जो जल्दबाजी का सिस्टम है ना, उसे खत्म करके सिर्फ लर्निंग मोड में अगर आएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बात बच्चे आते हैं कि भाई हम आए और अगले दिन ही हम ये बन जाए या वो बन जाए, उससे थोड़ा निकलना है। तो हर चीज पे, हर लेवल पे पहुंचने का एक लेडर है, एक रास्ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। और दूसरा ये कि हम मेरे पास बहुत इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं, गिविंग यू माय एग्जांपल, के हम बच्चे की अप्रोच ही चेक कर लेते हैं। बाज बच्चे वो बहुत अच्छे बोलते, बहुत अच्छे हैं, जिनको सिस्टम थिंकिंग का पता है, कोई डाटा एनालिसिस बहुत अच्छे करते हैं। तो आपको अपना स्किल को सेल करना आना चाहिए। आप उनको क्लियरली बताएं और अपने आप को किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनाएं। आजकल के जो बच्चों में जो डायलेमा है ना कि बस हम हर चीज के एक्सपर्ट हैं, उससे भी निकलने की कोशिश करें, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं। इफ यू टॉक अबाउट द डेटा, इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाएं। अब लोगों को, ऐसे लोगों की जरूरत भी होती है कि वो जो है ना एक एक्सपर्टीज हो और उस पर काम कर सके। All right. Thank you so much for joining us and making time for us, especially with that incredibly informative presentation, Dr. Afreenish. We're very, very honored to have you here with us today. And I'm sure our participants have learned a lot about the importance of antimicrobial resistance, as well as what they can, if they want to specialize in microbiology when they become public health specialists. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।